अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे विंसी का मैटिफाइंग टी ट्री फेस वॉश। इसकी पैकेजिंग के हवाले से देखें तो पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह से है। प्राइस थी 350 रुपीज़ आई गेस, और मे बी 380, बट 400 से ये कम था, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। और इसकी बैक साइड पे इसकी एप्लीकेशन और इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं। ये 120 ml का पैकेज है। टी ट्री के बेनिफिट्स ये होते हैं कि टी ट्री एक्ने को कंट्रोल करता है, पिंपल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है और एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टी ट्री ऑल्सो कंट्रोल्स एक्सेस ऑयलीनेस ऑफ स्किन। तो हमें टी ट्री के बेनिफिट्स मालूम हो गए। इसका इनसाइड देखें, जेल फॉर्म में है। इट इज़ ऑल्सो सल्फेट फ्री, एंड सल्फेट फ्री इसलिए क्योंकि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उन पे सल्फेट रिएक्ट कर सकता है। रिएक्शंस लाइक क्लॉग पोर्स एंड एक्नी, सो पीपल विद सेंसिटिव स्किन डेफिनेटली वांट टू अवॉइड सल्फेट। और अब हम बात करेंगे कि डज दिस रियली वर्क। तो जैसे कि मेंशन है कि सीबम कंट्रोल करता है, शाइन कंट्रोल करता है। आई बीन यूजिंग इट सिंस आई डोंट नो मे बी 2 weeks, but it doesn't really control any sebum or any shine on my skin. I have oily skin और मुझे इतना कोई फ़र्क अभी तक नज़र नहीं आया। Let me see, I am still using it. I will finish the whole package. If it works for me, I will update you guys. If it doesn't, I will still tell you guys. But अभी तक मुझे कोई भी इसका रिज़ल्ट नहीं मिला. So that's it. This was a review and I hope you guys like it. Please comment, like, share and subscribe to my channel.